अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जाओ बैठो, प्लीज बी सीटेड। अच्छा, सादिया हक साहिबा तिलावत। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे हुजूर, वालेकुम सलाम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फबिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिंता लहुम वलौ कुन्ता फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लंफ़द्दू मिन हौलिक फ़अफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम वशाविरहुम फ़िल अम्र फ़इज़ा अज़म्त फ़तवक्कल अलल्लाह इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुतवक्किलीन। यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम व यख़्ज़ुलकुम फमन ज़ल्लज़ी यंसुरुकुम मिन बादिही व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून। सूरा आले इमरान verses 160 and 161. Assalamu alaikum warahmatullah. वालेकुम सलाम। हाँ जी, ट्रांसलेशन नुज़रत हुसैन हसन शमी। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, beloved Huzoor. वालेकुम My name सलाम। is Nuzhat Hasina Shomi. I am reading the translation of the verses just recited, translated by Maulvi Sher Ali Sahib radiallahu anhu. In the name of Allah, the gracious, the merciful. And it is by the great mercy of Allah that thou art kind towards them. And if thou hast been rough and hard-hearted, they would surely have dispersed from around thee. So pardon them, and ask forgiveness for them, and consult them in matters of administration. And when thou art determined, then put thy trust in Allah. Surely, Allah loves those who put their trust in Him. If Allah help you, none shall overcome you. But if He forsake you, then who is there that can help you beside Him? In Allah, then, let the believers put their trust. Assalamu alaikum. वालेकुम जी। हदीस तोनिमा अहमद लबूनियों। प्यारे हुजूर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदि व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदि व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अन आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाहा रफ़ीक़ुन युहिब्बुर रिफ़्क़ फ़िल अम्रि कुल्लिही। बुखारी शरीफ।
Assalamu alaikum wa rahmatullah. अच्छा, इंग्लिश ट्रांसलेशन रिजवाना जमंदिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे हुजूर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Now I'm going to read the English translation of the Hadith. Hazrat Aisha, may Allah be pleased with her, reported that the Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, said, Allah is forbearance, and He loves forbearance in all matters. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallim innaka hamidum majid. Assalamu alaikum मेरे प्यारे आका. वालेकुम सलाम. You cried more than translation. अच्छा, आगे इक्तबास रूहानी खजाइन माहिदा रहमान. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू प्यारे हुजूर. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलातो वस्सलाम फरमाते हैं, उसके बंदों पर रहम करो और उन पर ज़बान या हाथ या किसी तदबीर से जुल्म ना करो और मखलूक की भलाई के लिए कोशिश करते रहो और किसी पर तकब्बुर ना करो गो वो अपना मातहत हो और किसी को गाली मत दो गो वो गाली देता हो. गरीब और हलीम और नेक नीयत और मखलूक के हमदर्द बन जाओ ता कबूल किए जाओ. बड़े होकर छोटों पर रहम करो न उनकी तहकीर और आलिम होकर नादानों को नसीहत करो न खुद नुमाई से उनकी तज़लील और अमीर होकर गरीबों की खिदमत करो न खुद पसंदी से उन पर तकब्बुर. हलाकत की राहों से डरो. कश्ती नूर रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 19 सफ़ा 11 तबरा. आपने उर्दू कहाँ से सीखी है? प्यारे हुज़ूर, मेरी अम्मी पाकिस्तान से हैं. अम्मी पाकिस्तान से हैं? चलो अच्छा, अम्मी ने सिखा दी हैं. और अबू यहाँ बंगाली हैं? जी जी ज़रूर. अच्छा अच्छा, चलो फिर बैठो. आगे इंग्लिश ट्रांसलेशन अमतुल वदूद. Beloved Huzoor, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I'm going to read the translation just recited. Show mercy to His servants and do not wrong them by your tongue or your hand or by any other means, and strive for the welfare of God's creation. Behave not arrogantly towards anyone, even if he is your subordinate, and revile not anyone, even if he should revile you. Become humble, tolerant, well-intentioned, and compassionate towards God's creation, so that you may be accepted by God. There are many who show meekness, but they are wolves from within. There are many who outwardly appear clean, but from within they are serpents. You, therefore, cannot be accepted by God unless you are the same inside and out. If you are above others, have mercy on the lowly and do not look down upon them. If you are learned, counsel the ignorant and do not degrade them with disdain. If you are wealthy, serve the poor and do not treat them with arrogance and self-conceit. Ruhani Khazain, Noah's Ark, page 19 to 20. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम.
Who is Secretary Umur Talaba? जी अस्सलाम वालेकुम हुजूर। Wa alaikum salam. There are how many students here? 122। 122. They are of all university going students or secondary school and university or colleges? हायर एजुकेशन, बीएससी ऑनर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर। Higher education, college and university, हैं? Right? यस हुजूर। इनकी ट्रांसलेशन, जिनको उर्दू नहीं आती है उनको ट्रांसलेशन करेंगी आप बांग्ला में? जी ट्रांसलेशन हो रही है, साथ साथ हो रही है ट्रांसलेशन बांग्ला में। अच्छा चलो फिर बताओ जी। सवाल क्या है? बैठ जाओ सेक्रेटरी साहब। सवाल जवाब जी क्या लड़कियां आना शुरू करें सवाल जवाब के लिए? हाँ करना है तो करो ना। नज़म पढ़नी है पहले नज़म पढ़नी है। नज़म पढ़नी चाहिए। हाँ ठीक है जी नज़म पढ़नी है। ठीक है नज़म पढ़ लो। बैठ जाओ सेक्रेटरी साहब, सिट डाउन। जी बैठ जाए। आपकी सेक्रेटरी साहब बड़ी घबराई हुई है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह प्यारे हुजूर। अस्सलाम। औलाद के हक़ में दुआ, पाकीज़ा कलाम हज़रत मसीह माऊद अलैहिस्सलाम। हम दो सना उसी को जो ज़ात जावेदानी। हम दो सना उसी को जो ज़ात जावेदानी। हम सर नहीं है उसका कोई ना कोई सानी। हम सर नहीं है उसका कोई ना कोई सानी। बाकी वही हमेशा गैर उसके सब है फ़ानी। गैरों से दिल लगाना झूठी है सब कहानी। गैरों से दिल लगाना झूठी है सब कहानी। सब गैर है वही है एक दिल का यार जानी। दिल में मेरे यही है सुबहाना मैया रानी।
दिल में मेरे यही है सुबहाना मैया रानी या रब है तेरा एहसान मैं तेरे दर पे कुर्बान तूने दिया है ईमान तू हर ज़मानी गहबा तूने दिया है ईमान तू हर ज़मानी गहबा तेरा करम है हर आन तू है रहीम ओ रहमान ये रोज़ कर मुबारक सुबहाना मैया रानी ये रोज़ कर मुबारक सुबहाना मैया रानी अहबाब सारे आए तूने ये दिन दिखाए तेरे करम ने प्यारे ये मेहरबान बुलाए तेरे करम ने प्यारे ये मेहरबान बुलाए ये दिन चढ़ा मुबारक मकसूद जिस में पाए ये रोज़ कर मुबारक सुबहाना मैया रानी हम दो सना उसी को जो ज़ात जावेदानी हम सर नहीं है उसका कोई ना कोई सानी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम।
हाँ जी, अब क्या कहती है? अभी सवाल जवाब के लिए लड़कियां आएंगी सवाल क्या- के लिए क्या कहते हैं, करो। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, beloved Huzoor. वालेकुम सलाम। My name is Fiza Ahmed. I am currently studying Bachelor of Science in Zoology. Huzoor, I want to know how students can study the Holy Quran alongside their usual studies. How can we research the Holy Quran and science side by side? You see, being a Muslim, you should recite the Holy Quran daily, do some tilawat daily, right? And Ji. while doing tilawat, after you should also read the translation of it alongside, right? Ji Huzoor. So then you will know that what you are reading from the Holy Quran, what tilawat you are doing, you know the meaning of it. And apart from that, you are studying zoology, then you try to find out the verses from the Holy Quran which are related to the science and the existence of the human being and the life on the earth. Then you can study and relate those verses with your subject. And then this is how you can find or get more enlightened about your subject from the Holy Quran, right? So you'll have to give some time Ji. on this and read some commentaries on it. Although if you cannot read Urdu, there is only one detailed commentary, to some extent, detailed commentary of 5 volumes, right? So you can read the commentary from 5 volume commentary of the Holy Quran. Okay? Ji Huzoor. And there are quite a number of Jazakallah. articles and speeches and discourses by Muslim Maud. They have been translated into English. You can read those one. Then you should you listen to the khutbahs of the Khulafas and their speeches as well. There you can also find out some related subjects, right? Ji. अच्छा, चलो। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, beloved Huzoor. वालेकुम सलाम। I'm Mahmood Akhtar, currently studying BBA in Finance. I have a question about aim in life. That is, how can one solve having difficulty focusing on a goal? Should one keep multiple options open if her primary goal is not achieved? You see, you should make some preference order that this is the subject you like more. If you get admission in that subject or you are able to achieve that goal, then well and good. Otherwise, you should shift over to the next option. And there should be some choices before you. What is your subject of interest? Finance. Are you doing bachelor's in finance? Yes, Huzoor. Acha. Then? BBA in Finance. Acha, BBA? Yes, Huzoor. Acha, so then Yes. what is your next choice? Since you are doing finance, what next do you want? I cannot understand you. No, you have already got admission in finance and doing your bachelor degree in it. So what is the problem now with you? There should not be any problem. You are already doing it. Actually, Huzoor,
I'm not satisfied by get admitted You are not into finance satisfied? department. You are not satisfied with the subject? No, Huzoor. Acha, so why did you take this subject then before? Actually, Huzoor, I don't like commerce-related What do you want subjects. now? What is your second option? My first option was doing government job, and that is to join admin cadre. But that is First option was government job. enough difficult for me. Then you will see, unless you complete your degree, and do at least master's degree in any of the subject, then you can sit for the public service exam. When you will qualify the public service exam, then you can be given government job. Otherwise, you will only be selected as an office clerk or a small worker or a peon of that office. You cannot be elected or selected, not elected. You cannot be selected as an officer. So, if you want an officer grade, then you will have to work hard, complete your bachelor's degree, then master's degree, whichever subject you want, and then you can sit for public service exam, and then if you qualify that exam, you will be selected for public service, and then you can get government job, otherwise not. So if you are not interested in finance, then you can judge yourself what is the other subject of interest. I don't know what is your preference. You know yourself better than me, and you can judge yourself. Yes, Huzoor. So see, multiple options, then you cannot focus on one thing. You say you should have 1, 2, 3 options. If you are not interested in this one, you will do this thing, or if not that, then do this thing. And that depends on the admission you get in. Once you have got admission in finance, then try to complete it. And when you complete your BBA degree, then you can either apply for public service exam, or you can do master and then apply for public service exam. Okay? Huzoor. Oh, जी हुजूर, many जज़ाकल्लाह. ठीक है ना, समझ आ गई है, चलो बैठ जाओ. Yes, Huzoor. ठीक, बैठो. Beloved Huzoor, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam. My name is Razia Rahman, currently studying Bachelor of Science, first year in Home Economics. Huzoor, my question is, we often write to you asking for your valuable advice, opinions, or decisions on various matters. You are doing home economics? Ji, Huzoor. Acha, then? We often write to you asking for your valuable advice, opinions, or decisions on various matters. But what should we do if the letter carrying your valuable suggestions doesn't reach us within the stipulated time? In that case, you should just do whatever you feel better or appropriate for you. So instead of wasting time, see, if it is the matter is about getting admission in some particular subject, and you are asking that should I get admission in this subject or not, or should I take these subjects in my bachelor's courses or master's courses, and you do not get letter on time, then whatever decision you make, you should make it on your own and just get the admission instead of wasting time and waiting for the letter, my letter or my advice to come to you. Okay? Ji, Huzoor. And if you receive letter later on, and my opinion or my advice is different from that of what you have selected or you have done,
then don't worry, just write to me that since my letter reached late to you, then the time was short. This is why you had already selected the subject and you are doing now this thing. So I will say, okay, no problem, you can continue with this. Okay? जी हुजूर, जज़ाकल्लाह. No need to worry. ठीक है, जज़ाकल्लाह. चलो जाओ फिर बैठो. Assalamu alaikum wa rahmatullah, dearest Huzoor. Islam. I am Jamia Ismita, currently working as an assistant professor at Bangladesh Agricultural University under the Department of Animal Nutrition. You are studying or working? I'm working right now and trying to pursue PhD in Germany. You're professor or lecturer? I'm assistant professor. Assistant professor? Yeah. Acha, mashallah. Yeah. Acha, what is your qualification? I am post-graduation, master's. Master? In animal nutrition. Animal nutrition? Ji Huzoor. Acha, mashallah. Haan. Now, what do you say? Huzoor, my question is that if a married Lajna member gets the opportunity to do her higher studies in abroad and her spouse is not allowed to go with her, or any scholarship doesn't have the facility to support for the spouse, then what should she do to continue her studies? You are married? Are you married? Yeah. Sure, I am married and I have a son also. If you are married and you have a child and you are professor, you are studying at the same time? Ji Huzoor. Ji Huzoor. Can't you continue your PhD there in Bangladesh? Ji Huzoor, there have facilities for my PhD in Bangladesh, but right now I don't get any type of. But my dream is to. If you have a facility to study in Bangladesh, to do your PhD in Bangladesh, and then it's better. The first preference should be that you do it in Bangladesh, because if your husband doesn't want you to go there alone, or you cannot take your son and your husband along with you, then it's better to do it in Bangladesh instead of going abroad. Right? Ji Huzoor, but if I get any scholar, later on when you get chance, then you can also go to abroad and update or further increase your knowledge by studying there in foreign country, in one of the developed countries. But at present, if your husband does not allow you and it disturbs the family life, then it is better to remain in Bangladesh and complete your studies there. Okay? जी हुजूर. ठीक है? हाँ, और जी है, जी हुजूर, ठीक है. Women's first preference is their home. Right? Okay? ठीक है. जी हुजूर. I get. Jazakumullah. Jazakallah. प्यारे हुजूर, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह. वालेकुम सलाम. मेरा नाम जन्नतुल फिरदौस मीम है. मैं नर्सिंग फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ. नर्सिंग फर्स्ट ईयर स्टूडेंट. अच्छा, नर्सिंग स्टूडेंट हो. अच्छा, क्या फरमाती हो, क्या कहती हो? हुजूर, मेरा सवाल ये है कि अक्सर हमारे मुआशरे में देखा जाता है कि लड़कियां शादी के बाद अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख पाती है, जबकि उन्होंने काबिलियत भी बहुत ज़्यादा होती है. तो इन हालत में लड़की अगर कुछ देर से शादी करे तो क्या ये बात मुनासिब होगी? क्योंकि कभी कभार देखा जाता है कि शादी के पहले लड़के वाले तो ये कह देते हैं कि शादी के बाद लड़की अपनी पढ़ाई जारी रख सकती है, मगर शादी के बाद वो इजाज़त नहीं देते. तो इस सूरत हाल में क्या करना चाहिए? बात यह है कि अगर अच्छा रिश्ता मिल जाए तो शादी कर लेनी चाहिए जल्दी, ठीक है? और
उसमें अगर ज़्यादा पक्का करना है तो लड़के से और ख़ानदान से ये बॉन्ड लिखवा लें कि मैंने शादी के बाद अगर टैलेंट है तो शादी के बाद पढ़ाई करूँगी, और पढ़ाई भी अगर किसी ऐसी सब्जेक्ट में करनी है जिसका कोई बेनिफिट है इंसानियत को, ठीक है, फिर तो ठीक है। अगर सिंपल हिस्ट्री में एमए करना है या सिंपल किसी ऐसे सब्जेक्ट में करना है जिसकी कोई ऐसी ज़्यादा वैल्यू नहीं है इस लिहाज से कि उससे कोई इंसानियत को कोई बेनिफिट नहीं पहुंच रहा, सिवाय इसके कि टीचर बन जाना है, तो इसलिए वो तो करने की ज़रूरत कोई नहीं थी। लेकिन अगर कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है और मेडिकल करते हुए या इंजीनियरिंग के कोर्स करते हुए इस दौरान में कोई अच्छा रिश्ता आ जाता है तो फिर ये बेहतर है कि शादी कर लो और उनसे बॉन्ड लिखवा लो कि हम मुझे बाद में पढ़ाई करने दोगे, ठीक है। और अगर वो ना करने दें, जी हुजूर। अगर वो ना, और बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि बाज़ दफ़ा इस दौरान में बच्चा भी पैदा हो जाता है, और बच्चा पैदा हो जाए तो फिर उसको संभाल नहीं सकते, देन उसमें फिर ये है कि फिर थोड़ा सा ब्रेक ले लें और ब्रेक के बाद फिर कंटिन्यू कर लें यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से अपना। यहाँ यूरोप में तो इस तरह हो जाता है, बांग्लादेश में पता नहीं इस तरह होता है कि नहीं, तो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं बाद में स्टडीज़ अपनी। तो पहली प्रेफरेंस घर है। किसी ख़ास प्रोफेशन में जाना है जिसका कोई बेनिफिट है इंसानियत को, फिर तो ठीक है कंटिन्यू करो स्टडी, नहीं तो घर को संभालो, ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। जी हुजूर, जी हुजूर, ठीक है जी। जज़ाकल्लाह हुजूर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। प्यारे हुजूर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। मरियम कानता है। मेरे वालिद का नाम मौलाना साले अहमद साहब है। मैं अभी इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर में बैचलर्स कर रही हूँ हुजूर। कर रही है बैचलर्स? हुजूर जी। अच्छा, उर्दू किसने सिखाई है, मौलाना साहब ने कि अम्मा ने? अब्बा ने। अब्बा ने, अच्छा अच्छा। हाँ, क्या कहते हैं? हुजूर, मेरा सवाल ये है कि वो लड़कियां जिनके खावंद वाक़फ़ ज़िंदगी है उनको किन मज़ामीन में पढ़ाई करनी चाहिए और किस किस्म की पेशा चुनना चाहिए? जो तो पेशा या पढ़ाई तो इंसान का अपना इंटरेस्ट होता है ना, स्टूडेंट का। कोई ज़बरदस्ती को इम्पोज तो नहीं किया जा सकता किसी के ऊपर, तुमने ज़रूर ये पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो जो भी इंटरेस्ट है जिसमें सब्जेक्ट में, उसमें पढ़ाई करें, ठीक। और साथ ये भी याद रखें कि अगर वाक़फ़े ज़िंदगी है खामन और वाक़फ़े ज़िंदगी में मुबल्लग है, मुरब्बी है, तो उसके साथ मुरब्बी और मुबल्लग की बीवी को भी दीनी इल्म हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। एक तो अपनी नमाज़ों की हिफाजत करनी चाहिए ताकि बच्चों की सही तरबियत भी हो, उनके लिए दुआ हो। फिर कुरान शरीफ बाकायदा पढ़ना चाहिए, उसका तर्जुमा पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। फिर दीनी इल्म सीखने की कोशिश करनी चाहिए। फिर आला अखलाक होने चाहिए ताकि जमात के मेंबरान की, अगर मुरब्बी की बीवी है तो तरबियत कर सके। अगर वाक़फ़े ज़िंदगी किसी और पेशे में है तो तब भी दीनी इल्म हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए, आला अखलाक होने चाहिए, ठीक है। तो अगर एडमिनिस्ट्रेशन में भी है वक्फ़े ज़िंदगी, तो असल चीज़ ये है कि पहले अहमदी बनो, सही अहमदी मुसलमान बनो। उसके लिए अपनी नमाज़ों की हिफाजत करो, कुरान करीम की तिलावत करो बाकायदा, उसका तर्जुमा सीखो, फिर दीनी इल्म सीखो, ठीक है। और बच्चों की सही तरह तरबियत करो, अब अच्छे अखलाक दिखाओ और लोगों को अपने अच्छे अखलाक से मुतासर करो, अहमदियों को भी और गैरों को भी। तो ये एक वक्फ़े ज़िंदगी की बीवी का असूल है, एक अच्छी अहमदी औरत का असूल है, राइट, ठीक है ना? जी हुजूर। तो बस पहली चीज़ तो यही है। बाकी कैरियर तो अगर मौका मिलता है कैरियर बनाने का तो बना लो, नहीं मिलता है तो घर जो है वो सबसे बड़ी चीज़ है, वहाँ रह के तो अपने बच्चों को
संभालो और उनकी आला तरबियत करो ताकि उनको अच्छा अहमदी मुसलमान और अच्छा शहरी बनाओ। ठीक है? ठीक, चलो फिर। हुजूर, मेरे पूरे घर वालों के लिए दुआ की दरख्वास्त। अल्लाह ताला फजल करे सब पे। आप शादीशुदा हैं? जज़ाकल्लाह हुजूर। आप शादीशुदा हो? जी। बच्चे हैं? जी हुजूर। कितने? नहीं हुजूर। हैं? नहीं है अभी। नहीं है, चलो अल्लाह ताला फजल करे। चलो अस्सलाम वालेकुम। जी जज़ाकल्लाह हुजूर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे हुजूर। वालेकुम सलाम। प्यारे हुजूर, मेरा नाम स्नेहा रहमान मीरा है। मैं उर्दू लैंग्वेज एंड लिटरेचर डिपार्टमेंट में ढाका यूनिवर्सिटी में ऑनर्स फर्स्ट ईयर में। उर्दू लैंग्वेज पढ़ रही है? जी हुजूर। अच्छा अच्छा, जो पहले आई हो उसकी बहन तो नहीं हो? नहीं हुजूर। अब उर्दू किससे सीखी है? हुजूर सीख रही हूँ, थोड़ा सा आती है अब। यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए सीखी है? जी हुजूर। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, क्या कहती हैं? हुजूर, मेरे सवाल ये है, हमारी यूनिवर्सिटी में तकरीबन हर वक्त कोई ना कोई प्रोग्राम होता रहता है, तो इन प्रोग्रामों में शिरकत की वजह से इन दिनों मेरी ज़ुहर और असर की वक्त ख़त्म हो जाते हैं और फिर मुझे ये 2 वक्त की नमाज मगरिब के साथ अदा करनी पड़ती है। प्यारे हुजूर, इस सूरत हाल में मैं क्या कर सकती हूँ? नहीं तो वो वक्त ज़ोहर का जो पहला वक्त होता है ना, ज़ोहर का पहला वक्त प्रोग्राम होते रहते हैं, तो उठ के छोटा तो थोड़ी देर के लिए 15 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए वहाँ से छुट्टी लेके जाओ और ज़ोहर के पहले वक्त में असर असर की नमाज़ें जमा कर लो और घर आके फिर मगरिब और इशा की जमा कर लो। ये तो गलत तरीका है ना कि हाँ प्रोग्राम होता रहता है तो हमने ज़ोहर असर मगरिब जमा कर लेते हैं, ये कोई बहाना नहीं है। वहाँ से उनसे छुट्टी लो, मुसलमान मुल्क है, कोई ईसाइयों का मुल्क तो नहीं है कि छुट्टी नहीं मिलेगी। उनसे कहो जी मैं नमाज़ पढ़नी है तो मैं ज़रा जा रही हूँ 5 मिनट की 10 मिनट के लिए, और असर और ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के वापस आ जाओ 10-15 मिनट में। ठीक है, छुट्टी मिल जाती है। ऐसी कौन सी आप स्टेज पे खड़ी होकर तकरीर कर रही होती हैं मुस्तकिल ज़ोहर असर से लेके मगरिब तक 3 घंटे बोलती रहती हैं स्टेज पे बैठ के। अगर स्टेज पे भी बोलना हो तब भी चंद मिनट के लिए बोलना होता है ना, उसके बाद उठ के जाओ और नमाज़ पढ़ के वापस आ जाओ जल्दी से। आखिर जब किसी ने वॉशरूम जाना होता है तब भी तो उठ के जाता ही है ना फंक्शन में से। तो वॉशरूम में तो 10-12 मिनट लगा के आते हैं, तो उतनी देर में आप वज़ू करके नमाज़ पढ़ के भी आ सकते हो। जी सर। ठीक है ना? जी सर। हाँ जज़ाकल्लाह। ठीक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिलावद हुजूर। वालेकुम सलाम। Huzoor, I am Amtul Masawar Dhora. Currently, I am studying BSc in Physics. Huzoor, my question is, sometimes the subjects we choose to study would allow us to build successful careers, but they would not be useful for the service of the Jamaat. What should we do in such situations? Are you studying? Yes, Huzoor. What are you studying? I am doing my BSc in Physics. PhD in Physics? Yes, Huzoor. Yes. So after doing your PhD in Physics, you will teach in a university or you will go into research field? Huzoor, I want to be a teacher. Teacher, university lecturer and professor, huh? Right? Ji Huzoor. Then? Ji Huzoor. It is quite beneficial for the Jamaat if you are a teacher, if you are a true portraying your true picture of a Muslim woman, then your staff members and your students would know that she is the true portrayal of Islam, Islamic teachings. And at the same time, she is quite a good teacher. She has good morals. She knows, she has some religious knowledge. And she offers her prayers on time. And then this will also open the doors of tabligh
and introduction of Islam and Ahmadiyya. So every subject is beneficial for the Jamaat. Don't think that physics is a subject which is not beneficial for the Jamaat. This is the person who makes the subject beneficial or not. Right? So if you are doing PhD, it's quite a good subject. You can after completing your studies. Are you working at present as well? No, Huzoor, I'm only studying. So you did your MSc in physics and then got admission in PhD, right? Inshallah, Huzoor. Are you doing PhD or you are doing MSc? Currently, I'm doing BSc, Bachelor of Science. BSc? Bachelor of Science. Acha, bachelor is okay, no problem. So after completing your bachelor's degree, you to do MSc degree, and then, if possible, PhD degree. But must remember, as I have already said, at the same time, if you get good match, good rishta for yourself, then your first preference should be to get married, and to take care and look after your household and your children, and right. But if your husband allows you to continue with your studies or allows you to work in the university or any field which you have chosen, then you can do that one. But at the same time, as I have said, make it you should be the true portrayal of the Islamic teaching. That is the main character of an Ahmadi woman or a girl. Right? जी हुजूर, जी हुजूर. ठीक है, बैठ जाओ. Jazakallah हुजूर, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. Our beloved Huzoor, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Walaikum salam. My name is Maksuda Akhtar Rajuni. Huzoor, I want to present you a practical example from my life. Acha, okay. Present it. My sister got admitted during her pregnancy. Due to delay in formalities. Admitted in a hospital, not in a school, college. Then what happened? Due to delay in formalities, she was finally admitted to the ICU. But unfortunately, she lost her child. Because of these formalities. Yes. Huzoor, being an Ahmadi woman, which one should we give priorities in medical profession, morality or law? You see, the first thing is the profession is to save the medical profession is to save the life of the person, not the formality. So formalities can be done later on. The first preference should be to save the life of the person. This is the ethics, and this is the doctor's duty. And this is the true action taken by a doctor, that he should show, or good morals, as I have already said. Morality is the first preference. Professional ethics is the first preference. Both requires that the patient should be given priority for the treatment instead of involving or taking time on completing the formalities of admission and this and that. That is wrong. So those doctors who are after formalities and do not take care of their patient immediately and do not show sympathy to their patients, they are not doctors, they are butchers. So whatever they have done, it was wrong. The first preference of a doctor should be
the value of a human life, right? Not the formality of the administration. If you are a doctor or an Ahmadi woman or even a human being, a true human being should, as I have already said, he should prioritize the saving of the human life and sympathy to a human being. Right? Ji Huzoor, inshallah. Acha, okay. Then now time is over and Allah Hafiz. Jazakallah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.